Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Engineer Zainul Abedin, and here we are going to discuss the lecture of science for grade 6. So, students, in our previous lecture, in our today's lecture, we will learn about the hazards of burning and risks of burning and flammable substances. So, first of all, we will see कि बर्निंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये हमने कल देखा था, हीटिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और आज हम देखेंगे इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और किस किस तरह से नुकसान हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होती हैं, इनके साइंस और सिंबल्स वगैरह जो हैं वो डेली लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। सो फर्स्टली लेट्स सी द हैजर्ड्स एंड द रिस्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बर्निंग ऑफ एनीथिंग कंटेन्स हीट। सो ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, व्हेन एनीथिंग बर्न्स it contains heat. This heat is actually in the form of heat energy, light energy, or sometimes in the form of sound energy. Okay, so the thing that is actually burning, it must contain heat, and your body can bear, or you can say all the living things can bear that heat or temperature up to a specific limit. If the heat will exceed that specific limit, it will endanger you. It will be very much harmful for you. Okay, you must have seen a person having burnt skin nearby you. आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उसका हाथ आग पर आने की वजह से जल गया. So that is because of fire. Fire is actually burning of woods. So burning of woods contain heat and light energy. So light energy, you just can see the light energy, but you can feel the heat energy. It is very much dangerous and harmful for you as well as for all the living things. Okay, so the energy that is coming from the burning can be positively used or negatively used. The positive use is the production of electricity in the powerhouse, as I have told you in our previous lectures, and the negative ways you can burn anything. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ शिकागो. ये अमेरिका की स्टेट जो शिकागो है, ये उसकी तस्वीर है. यहाँ पे एक घर के ऊपर ये आग लगी हुई है. सो इट इज़ एक्चुअली डेंजरस. इट इज़ क्रिएटिंग हार्म फॉर ह्यूमन बींग्स. ओके, सो इसको आपकी मर्जी, आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है. सो इट कैन हार्म्स यू एज वेल एज इट कैन produce some benefits for you. It can be used for the beneficiary of the human beings as well as for the harmfulness of human being. So after this we have the signs. Here you can see this kind of symbol is used for the hazards, or जिस जगह पे भी आपके पास आग लगी हो या आग लगने का खदशा हो, you must have seen this symbol on your petrol pumps. Also you have seen this symbol on your petrol pumps as well as in markets as well. So these two symbols, mainly this symbol is actually used to show that this you cannot use fire at this specific place, and you must have seen the symbol on the petrol pumps necessarily. After this we have the flammable substances. So according to the definition of flammable, the flammable substances are the substances that can easily catch fire and burns rapidly. कि वो तमाम चीज़ें जो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती हैं और जल्दी जल्दी जलना शुरू हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव डन एन एक्सपेरिमेंट इन योर पास्ट, कि आपने कभी पेट्रोल को आग लगाई हो, वो बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से आग को पकड़ता है और जल्दी जल्दी आग को जो है वो अपने आप को जलाना शुरू कर देता है. सो डैट इज़ एक्चुअली ए फ्लेमेबल सब्सटेंस. आपने कभी घरों के अंदर जो हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, उस गैस पे कभी आग जलाई हो तो वो फ़ौरन से आग पकड़ लेता है और जलना शुरू हो जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंसेस. Okay, so here we have the examples of flammable substances. First of all we have petrol, gas, and then kerosene oil. Kerosene oil is actually a flammable substance that is used in the aircrafts as well. Okay, after this we have the symbol for the flammable substances. You must have seen the symbol behind the transportational wagons or transportational vans of the petroleum. After this you must have seen this kind of symbol. Both of these symbols are actually available on your book as at page 133. Okay, so you must
take away yourself from the flammable substances, because it is very much dangerous and harmful for you as well as for all other living things. Okay, so if you have any kind of question related to the flammable substances, hazards and the risks of burning, you can ask me. I'm there for you. Thank you very much.